Uttar Pradesh, where there is still a health crisis that continues to plague many districts, with the dengue outbreak continuing. And the biggest crisis center is that in Firozabad, where the hospitals are full. Yet again, in the last few days, as the cases have spiked, there are no doctors available. People are now having to go to alternate centers, from homeopathy clinics to whoever is available in healthcare centers, to any other kind of quack doctors who may be available. People are now desperate to anybody who may be able to give them medical attention. You can see patients lying on cots, on benches, on the floor as they are being administered drips in such healthcare centers. The situation, our reporter found, was like this in multiple villages in the Firozabad district, in multiple clinics in Firozabad itself. Patients are not only seen lying on benches on the floor, they were also getting intravenous injections with no official medical authority present at that point. Fluid bottles were attached to pillars and even windows. This is the state of affairs. Families distraught, without any clue on where to go, what to do, running from pillar to post, many of them being sent overnight from Firozabad to Agra. Agra hospitals have now begun to get overcrowded. But what is it that our netas are doing? Politics, and the kind of politics that they believe will get them votes. Religion-based politics, invoking the Ram Mandir, leading Tiranga Yatras, talking about Abba Jan, and God knows what all. This is what our netas are talking about. Not about the state of affairs where dengue outbreak has taken place. Not about the abysmal healthcare infrastructure. Not about the fact that after 1.5 years of living in a pandemic, why is it that our healthcare is still so weak that it's not able to even handle this seasonal problem? They are busy invoking Ram Mandir. They are busy visiting Ayodhya. They are visiting, proving to the people who is a bigger and a more honest Hindu amongst the politicians. Politics yet again overshadowing people issues. Let's say good evening to Harish Chandra Srivastava, spokesperson for UP BJP, and Mr. Sharad Pradhan, senior journalist, also joining me right now. Let me go across to Mr. Srivastava first. Mr. Srivastava, क्या कारण है कि वापस से, let's just talk about Firozabad to begin with. Again, this problem has become so grave and we're not able to handle it. Dengue is an annual affair and we are still struggling. देखिए, एक तो जो आरोप आपने लगाए वो पूरी तरह से निराधार हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों के सभी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए दिन रात सक्रिय रहती, और एज वेल एज जैसे ही फिरोजाबाद में ये डेंगू ब्रेकआउट का जब से ये डेंगू को लेकर के खबरें आई, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत फिरोजाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने हॉस्पिटल्स को विजिट किया और जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए। देखिए, ये जैसा आप स्वतः कह रही हैं कि सीजनल बुखार है और ये इस मौसम में स्प्रेड होता है। सरकार ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने दस्तक प्रोग्राम करके घर घर जा करके लोगों को इस बात के लिए आगाह किया था कि वो जो कूलर है, जो प्लास्टिक्स के कहीं पानी इकट्ठा होता है जिसमें इसके डेंगू के लार्वा पैदा होते हैं, उन सब को साफ करने के लिए और इस तरह के प्रिकॉशंस को बरतने के लिए जुलाई में दस्तक प्रोग्राम किया था। और फिर सितंबर में भी 7 सितंबर से 16 सितंबर तक का कार्यक्रम दस्तक का रखा। ये जरूर है कि हम सब कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही के कारण ये समस्याएं बड़ी विकराल हो जाती हैं। फिरोजाबाद एक छोटा सा टाउन है और वहां का जो मेडिकल कॉलेज था उसकी जो कैपेसिटी थी, जो 10 ब्लॉक इससे अफेक्टेड हुए, फिरोजाबाद के 9 ब्लॉक रूरल थे, एक शहरी ब्लॉक था, और उससे अब तक जो टोटल जो संक्रमित संख्या हुई वहां की
वो जो उपचारित हुए वो 4100 समथिंग लोग उपचारित हुए, जिसमें से 60 फुल कैजुअलिटी डेंगू से फिरोजाबाद में हुई। हम्म। सभी वहां के जो कोविड हॉस्पिटल थे उनको अलाउ किया गया कि वो सभी डेंगू के या फीवर के जो भी पेशेंट आते हैं उनको ट्रीट करेंगे। और ये सारी जो फैसिलिटी थी, आईसीएमआर की टीम आई जांच के लिए और उन्होंने इन जो वहां के डाटा कलेक्ट किए, उसमें इस बात को प्रूव हुआ कि ये जो डेंगू के लार्वा मुझे हैं, ये बताइए ये मिस्टर पूरे श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि सब सही किया हमने और इतने सारे स्टेप्स ले लिए। योगी आदित्यनाथ खुद वहां चल के 2 हफ्ते पहले ही चले गए थे, उसके बावजूद 7 मौत कैसे हो गई? इन 48 आवर्स 16 डेथ्स वर स्टिल रिपोर्टेड। देखिए, उसके लार्वा इतनी व्यापक स्तर पर बढ़ गए थे कि जो भी मेजर्स लिए गए, उसके बावजूद भी चूंकि डेंगू का जो मच्छर होता है, एक को अगर बाइट कर लिया एक पेशेंट को, तो उसके बाद जितने को बाइट करेगा सबको डेंगू के बैक्टीरिया फैल जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है डेंगू से। इसके नाते ये समस्या फिरोजाबाद में खड़ी हुई। सरकार ने उस सभी आवश्यक कदम उठाए, जिससे और कल केवल एक कैजुअलिटी इससे डेंगू से फिरोजाबाद में हुई है। और कल जो सैंपल टेस्ट किए गए थे, उसमें से जो संक्रमित की संख्या आई है वो 0 आई है। जो कल 26 सैंपल डेंगू के टेस्ट किए गए थे, तो काफी प्रभावी नियंत्रण इस पे जो स्टेप उठाए गए, उसके कारण डेंगू पे मिला है। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी है सरकार की, जो विभाग हैं इससे कंसर्न, उनकी जिम्मेदारी तो ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेंगू सबको मालूम है कि डेंगू बरसात के सबको मौसम में मालूम आता है है कि डेंगू और हर साल डेंगू आता है, बरसात के मौसम में आता है, खुला जहाँ पानी इकट्ठा हो जाए वहां से होता है। फिर भी अगर हम और हमने ये रिपोर्ट्स दिखाई कितने जगह डिस्ट्रिक्ट्स फिर में भी हम जाके लोग जो है, कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने ना कोई कैंपेन अवेयरनेस की करी, ना कोई सफाई की इनिशिएटिव लिया, देखिए जब तक कि डेंगू आउटब्रेक नहीं हो गया। किस इंतजार में रुके थे ये नहीं देखिए, मालूम। मॉनसून सीजन ऑफिशियली मिस्टर अब श्रीवास्तव बहुत पहले शुरू हो गया था, अब तो हम सितंबर में बात कर रहे हैं इस बारे में। 1 मिनट। अवेयरनेस कैंपेन के कारण आप पूर्वांचल में देखिए, जहां एक्यूट एंसेफेलाइटिस से 1600 से लेके 1500 से लेके 2000 कैजुअलिटी हर साल होती थी, वो वहां पूरी तरह से पर ये प्रॉब्लम है एक्यूट मिस्टर श्रीवास्तव। ओके, I take your point. I take your point. Let me just say this, Mr. Srivastava, that while you have to deal with the COVID and deal with encephalitis, you cannot forget dengue. It's not one over the other. ये सब करना है, सरकारों का यही काम होता है, Mr. Sharad Pradhan. But I don't think the governments believe that it actually matters to them because the election season has just started. Mr. Srivastava, just 1 minute, please allow me to go across to Sharad Pradhan. Mr. Pradhan, I think the political parties believe creating noise about what's happening in Firozabad, or the way it's now, also adding cases in many other parts of the state, isn't really going to get them votes. Talking about Ayodhya, they believe will get them votes. That what has been done is mostly been done on paper. For this is an exercise which, for all you know, on their records they might have already cleaned all these potholes, removed, done a lot of disinfectants use must have been done all on paper, because a lot of money allocated for these preventive health measures are more often than not that money is pilfered. And this happens with impunity, and I can assure you that is the core of and nobody catches these crooks, because it becomes a you scratch my back, I scratch yours. This kind of a malpractice continues, and that is why year after year you continue to have waterborne, vector-borne diseases, and they keep killing people. But who cares? That is the tragedy. And had they been actually, you are absolutely right. If they had actually carried out the preventive measures, this would not have come. Things would not have come to such a pass that so many children, so many people have lost their lives. And I can tell you, this is going to spread if the rain continues. Fortunately, the rains in UP, rain is on the wane.
now. So otherwise, this would have become a major problem. And if it starts raining again, you can't say. Yes. You'll have a problem multiplying. Absolutely. Completely out of time. I was a little short on time, but thank you for both of you for joining me. I want to again just go to these visuals once and leave these visuals for our viewers. I don't really need to say anything more. Just look at how our healthcare system exists in so many parts of our country even today. Just look at those visuals that will show you. Children, young boys lying on the floor, the drip actually hanging from somewhere on the wall. Absolutely no medical supervision inside. Somebody is just given them one drip. This is the state of affairs. These are the kind of primary healthcare centers, not the official ones, but local ones, homeopathic, other kind of coax, whoever is available, whatever is available right now. People are resorting to those measures to save the lives of their own children. All because we do not give any importance to healthcare in this country, and the pandemic has taught us no lessons. We rather brag about achieving 75 crore vaccinations than actually look at what still exists as a big challenge in our country. Thank you for joining us.